Hello all, welcome to CSAT-A-Day. Let's go on to the next reading comprehension question for the day. So we are dealing with 2020 paper. This is set A, question number 66 and it's an inference kind of question. Okay, so passage में कुछ information होगा, उससे आपको infer करके answer तक पहुंचना है. So this is the passage. I would say quite a long passage as compared to other passages. Question देख लेते हैं. Which is the most logical inference from the above passage? What is the ये चार inferences है उसमें सबसे ज़्यादा logical inference कौन सा है वो आपको choose करके निकालना है. Let's start reading the passage. You can pause the video, attempt and then get back. Let's start reading. In Part 3 of the Constitution, which assures people certain fundamental rights, Article 25 proclaims that all persons are equally entitled to freedom of conscience and right to freely profess, practice and propagate religion. So ये कह रहा है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में आर्टिकल 25 में ये प्रोक्लेम किया गया है कि ऑल पर्सन्स आर इक्वली एंटाइटल्ड, हर आदमी को ये फ्रीडम है to freely profess, practice, and propagate their religion. What people fail to notice is that this proclamation is prefixed. Prefix क्या होता है? जो उसके किसी चीज के पहले आए उसको prefix बोलते हैं. So this proclamation is prefixed with the words subject to public order, morality, health, and to other provisions of this part. तो ये क्या कह रहा है कि ये आपको तो समझ में आ गया कि आप अपना राइट टू रिलीजियस प्रैक्टिसेस को आप प्रोफेस, प्रैक्टिस और प्रोपगेट कर सकते हैं. बट इसको प्रीफिक्स किया गया है ये बोल के कि सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ एंड टू अदर प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट. ओके, सो इसमें ये प्रीफिक्स लगाया हुआ है विच सेट कंडीशंस प्रेसिडेंट फॉर लीगल प्रोटेक्शन ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिसेस ऑफ एनी कम्युनिटी. तो ये किस लिए है? प्रोटेक्शन ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिसेस के लिए ये प्रीफिक्स लगाया गया है इसके आगे. So the closing word in this prefatory rider in Article 25 virtually constitutes a subordination clause, placing other fundamental rights mentioned in Part 3 over and above the right to religious freedom. So ये prefix लगाने की वजह से क्या हुआ कि ये right to religious freedom के ऊपर हो गई बाकी rights. Okay, बाकी rights थोड़ी इससे ऊपर हो गई just because of this prefix. So other fundamental rights mentioned in Part 3 are over and above the right to religious freedom. Among those other fundamental rights, अब ये other fundamental rights क्या हैं? Among those other fundamental rights is the right to equality before law and equal protection of law. Okay, so assured at the outset and elaborated in later articles to mean जो कि पार्ट 3 के आउटसेट पे भी लिखा हुआ है और आगे इलेबोरेट भी किया हुआ है. एंड इट मीन्स इंटर आलिया वर्ड का मतलब है अमंग अदर्स. सो इसके इन राइट्स के और भी दूसरे मीनिंग्स होंगे बट अमंग अदर उसका ये भी मीनिंग है दैट स्टेट शैल नॉट डिनाई इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ टू एनी पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन्स ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन अलोन. ओके, सो अमंग अदर थिंग्स उसका ये भी मतलब है कि स्टेट शैल नॉट डिनाई, स्टेट किसी को डिनाई नहीं कर सकता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज टू एनी पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन अलोन. ओके, सो दिस इज द पैसेज ऑल अबाउट. नाउ लेट्स लुक एट द इन्फरेंसेस. सबसे लॉजिकल इन्फरेंस आपको ढूंढना है, मोस्ट लॉजिकल. दैट मीन्स एक से ज्यादा आपको सही लग सकते हैं. स्टेट शैल नॉट इंटरफेयर विद द रिलीजियस affairs of the citizen. No, we'll not go by this क्योंकि वो ऐसा बिल्कुल नहीं है. And it is also there is also no mention of state being interfering or not interfering. But basically यो आप अपने knowledge से भी आपको पता है कि ऐसा नहीं हो सकता कि state interfere ना करे. Religious freedom under constitution is open to state intervention. Okay, this seems to be logical. Let's park this option. See, देखते हैं, religious freedom of citizen is not covered under fundamental rights. Now this is completely wrong क्योंकि सबसे पहला लाइन ये है कि Part 3 of Indian Constitution के Article 25 में ये discussed है. Okay, so this is very evidently mentioned. Religious practices of any community are immune to state laws. Not at all, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. So B seems to be the most logical inference.
that we can make from the passage, which says religious freedom under constitution is open to state intervention, कि state उसमें जरूरत पड़ने पे intervene करेगा. So this is the passage all about. Let's look at the other things. This is an inference kind of question. Polity area से एक question था और आपको एक बार understand passage को समझ के पढ़ने की जरूरत है और आप inferences easily समझ जाइएगा. Let's look at the keywords from the passage. Constitution, supreme law. हमें सबको पता है constitution क्या है. Fundamental rights, basic individual protection. Proclaims, declare करना. Okay. Freedom of conscience, right to personal beliefs. Profess, practice and propagate. Express, follow or spread religious beliefs. Subject to, depending on, provisions, rules. Subordination clause, statement indicating legal hierarchy. Inter alia, जैसे मैंने बताया, among other things. Okay, so these were the keywords from the passage, and that was the last passage of paper 2020. So let's meet with the further PYQs of different papers from tomorrow. Thank you.